Yes, so now I'm getting your messages as yes, that I'm audible. So I'll begin the session. Hearty good evening to everyone present here. The session today that I'll be talking to you about is on the 1 year preparation plan for UPSC CSE. And we'll discuss on a lot of issues. I had given a Google form in which I got a feedback of what exactly you wanted me to share with you. And so that included questions from a lot of backgrounds, right from how to start, uh, queries regarding preparation, coaching, self-study, then test series and books and book list and everything. So I will be touching briefly in a matter of around 1 hour on all the topics, and one by one we'll be taking all those things. बिल्कुल हम हिंदी और इंग्लिश माध्यम कोशिश करेंगे कि दोनों दोनों मीडियम में मैं आपसे चर्चा करूं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सभी लोग हमारी बात समझ पाएं. तो आई विल कीप इट bilingual kind of a session. Okay, my voice is not audible is something which people are telling. Okay, so we'll start with the session. The first thing is that when to start is something which is there. We all start at different stages in our life, so to say. Sometimes when you are, when you are in your college and you realize that you want to study for UPSC, so that is when you start preparing for it. Sometimes it might be your childhood dream. Like I was in my school and I was thinking that I want to become an IAS. I had no idea of how to go about. बिल्कुल नहीं पता था. But फिर भी ऐसा सोचते थे. तो there can be some people like that. तो जो लोग अभी स्कूल में हैं और जो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, what is it that we should do, let me tell you very clearly, school is not the stage in which आप ऐसा कुछ साइजेबल कर सकते हैं जिससे आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. स्कूल इज नॉट दैट प्लेस. You are very young in your school. We are around 15-16 when we come out of the school, so that is not the age. And at that time most maximum कुछ अगर आपको करना ही है तो maximum you can do is you can read the newspaper and you can find out what is going on around you. आप अखबार पढ़ सकते हैं. दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं. दैट कैन बी वन थिंग विच यू कैन डू. यू कैन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, स्पोर्ट्स में, स्पीच में, ऑल दैट डेवलप्स योर कैपेबिलिटीज़. क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम आपको ना कॉलेज में मिल पाएगा और ना ही उसके बाद मिल पाएगा. बट स्कूल इज़ द टाइम वेयर यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. सो ऑल दोज थिंग्स यू शुड बी डूइंग इन स्कूल. पर बहुत ज़्यादा कुछ यूपीएससी से रिलेटेड आप कर पाएँ, दैट इज़ नॉट देयर. सो students who are in school need to really need not worry much about UPSC preparation as of now. The major preparation which begins is mostly at the end of your graduation or after your graduation, or you might be in a job, and at that stage you realize that you want to give this exam of the Union Public Service Commission Civil Service Examination, and you need to sit for this exam. So that is the time where you have to become utmost serious and you have to give your 100%. देखिए, फर्स्ट चीज होता है डिसीजन कि what to do. So if and when you decide at that moment, you have decided that now this is what I am going to do, so you should give your 100-200%. And given that अगर आप अपने हर दिन का around 6 to 8 hours if you are giving to your preparation, then 1.5 to 2 years is a sizable amount of time to crack this exam. A lot of people like all the batchmates that I met and I talked to, everybody happened to have that 1.5 to 2 years of very focused preparation which helped them to crack the exam.
I will be talking about the planning, the different things to be done in that 1 year, 1.5 to 2 years of your preparation, and how to go about by it. So, considering that we are talking about those students who will be giving the exam next year, that is Civil Service Examination 2023, 2023. तो अभी हमारे पास समय है 1 साल और 2 महीना. 1 year and 2 months is the time that we have. In this particular time, I am assuming that you are starting from scratch. तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि how do you begin your preparation. The first major thing that you do for preparation and which is the big amount of syllabus is the general studies syllabus. जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स की भी हम बात करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें कवर होते हैं. तो वन इज जनरल स्टडीज, देन कम्स योर ऑप्शनल. ऑप्शनल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर. आपके 250 ऐसे 2 पेपर्स होते हैं. 500 मार्क्स कम फ्रॉम योर ऑप्शनल. And उसके बाद you all know that UPSC CSE is conducted in 3 parts. So there is prelims first and then there is mains. Another 2 important parts of UPSC preparation are tests and answer writing. Answer writing is also extremely important. So there are 4 stages, 4 levels which I tell, which are very crucial for your preparation. The first level is your NCERTs. Now NCERTs, if you read, आप बोलोगे कि हम तो ये 6th में पढ़ चुके हैं या 7th में पढ़ चुके हैं या स्कूल में we have read it already. But the entire base, the foundation of your UPSC preparation comes from the NCERTs, because right from 6th standard, for example, geography. If you're talking about volcanoes, if you're talking about that particular a lot of geographical structures, 6th स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक लेवल से आपको एक्सप्लेन किया जाता है. वो कॉन्सेप्ट्स हमेशा सेम रहेंगे, आप चाहे 6th में पढ़ें या फिर उसको आप एक कंपाइल्ड किताब के रूप में पढ़ लें, लेकिन कॉन्सेप्ट्स सेम रहते हैं. और इसीलिए 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th की सिलेक्टेड बुक्स NCERTs are extremely important. So whenever you are starting your preparation, please start with NCERT. Don't miss it. They are your foundation course. And they are their foundation base for your preparation. And आप एक particular time amount set कर सकते हैं, amount of time, जैसे कि 2 महीना या 3 महीना whatever it is, कि हमें इतने समय में अपने NCERTs को complete कर लेना है. अब इसके साथ एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम NCERTs के नोट्स बनाएं. NCERTs के नोट्स आपको बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके नोट्स बनाए जाएं. सी नोट्स इज समथिंग विच, कोई बहुत चीज़ कॉम्प्लेक्स है, वो आप फिर से उसको उसी बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा. उनके नोट्स हमें बनाने चाहिए. हर चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसका वो ज़रूरी नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं उसको. फर्स्ट दैट वाज NCERT. आफ्टर NCERT द सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज द स्टैंडर्ड बुक्स. स्टैंडर्ड बुक्स होती है हर सब्जेक्ट की. So अब जब मैं आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ तो I just introduce you the subjects. We have basically 5 to 6 major subjects जो हम general studies में categorize करते हैं for CSE. First is the polity. Polity is all about the structure, the governing structure of the country. The constitution is the base of the entire polity subject. उसके बाद Supreme Court judgments आना है, उनको पढ़ना है. All of this comes under the Indian polity. Second is economics. Then comes geography, history and environmental science and current affairs का portion तो हर इसमें रहता है. So when I'm talking about standard books, you should choose each and every, like you can choose one standard book for every subject and one book is sufficient. What happens is हम लोग बहुत ज़्यादा sources के पीछे भागते हैं. UPSC में there is multiplicity of sources. आप देखेंगे बहुत सारे material available रहते हैं. But we should be focusing on one particular source only. Why? Because the revision is also important. अगर आप 4 किताबों से पढ़ रहे हैं तो आप 4 किताबों को revise नहीं कर पाएंगे. There is a time constraint also. So it is better and good that you choose one book for every subject. That will be your standard book. After that, with that book, you can also take up a reference book. Standard book is something which you should be reading cover to cover.
जैसे there is M. Lakshmikant's book which everybody reads in polity. So that is a standard book that needs to be read cover to cover. Do not skip anything out of it. But say there is D.D. Basu. So D.D. Basu is a book which is a bit complex and it can be used as a reference book. That means कुछ selected chapters आप जो है उसमें से पढ़ सकते हैं. इसके बाद we were talking about whole year का preparation, right? So whole year preparation में एक चीज़ ये important हो जाती है कि you plan your preparation very well. The time available is limited. The books to read, the subjects to cover is very vast. See, the catch with UPSC is not that it is difficult. The concepts that you will be learning for the exam are not very difficult. They are not complex. The only challenge is that the syllabus is very vast. You have to cover a lot of topics from a lot of areas. You have to know everything about, you have to know little things about everything. तो उसके कारण ये vast हो जाता है. That is why it becomes a bit of a challenge. So the best thing which will help you out is planning. Planning कैसे? There are 2-3 levels of planning which you can do. First is basic daily planning, which I always tell कि do not sleep at night before planning your next day. When you start a day, you should be having in your hand कि हमें आज क्या क्या cover करना है, right? This is micro planning, day planning. Second comes the weekly planning. For example, इस week में what all are the subjects which or what all are the topics which I am going to cover. तो आप topics note कर सकते हैं. There are two ways. कई बार there are students who cover one particular subject only in a day. उसी को वो लोग कंटिन्यू करते हैं, 10 दिन तक पढ़ते हैं या 15 दिन तक पढ़ते हैं. कुछ लोग हो सकते हैं जिनको एक सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट लाइक टू स्टडी वन सब्जेक्ट continuously. So what I did was I kept a combination of two subjects, two static subjects. So for example, I'm giving 2 hours for economics and I'm giving 2 hours for polity. So any combination which suits you can be utilized, can be done. And then you should have a broad monthly plan. Say if you're planning for the next year CSE, you should be having in mind कि there are a couple of months, say 5 to 6, जिसमें you will be covering all your general studies, जिसमें you will be covering the major topics that will be asked, and this preparation has to be integrated both for pre and mains. A lot of people ask कि should I study for pre, should I study for mains? See, let us understand one thing very clearly. प्री में जो आपसे पूछे जाने वाला है वो सारी चीजें आपसे मेंस में भी पूछी जाएंगी, लेकिन मेंस में कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे. वी विल टॉक अबाउट दोस टॉपिक्स अलग से, लेकिन प्री का सब कुछ ही मेंस में आने वाला है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्री एंड मेंस इज द मैनर इन विच यू आर सपोज टू आंसर. जैसे प्रीलिम्स में द आंसर इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, वो 4 ऑप्शंस में से ही एक आंसर होता है, तो आपको चूज करना है. सो उसमें अलग तरीके का आपके स्किल्स टेस्ट होंगे कि आप पर्टिकुलर उतने अमाउंट ऑफ टाइम में किस तरीके से जज करते हैं कि ये कौन से 100 सवाल हैं जिसमें से कौन से आप अटेम्प्ट करेंगे, एंड यू नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी यू विल यू हैव एंड हाउ व्हाट मार्क्स यू विल गेट. सो दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ टेस्टिंग यू. एंड मेंस एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट वे ऑफ टेस्टिंग यू कि आप उतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में उस क्वेश्चन के बारे में कैसे 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में अपने पूरे अंडरस्टैंडिंग को उस टॉपिक के आप बता सकते हैं. सो बोथ आर 2 different ways of examining you, but the content majorly remains the same. You have extra content in mains, right? So you should first start with integrated preparation. मतलब you can start by studying a subject in a manner कि आप दोनों प्री और मेंस के क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर तो सेम रहने वाला है. So do not study exclusively. जैसे एग्जाम का वो पर्टिकुलर फेज पास आता है, जैसे प्री पास आता है, उसके 2-3 महीने पहले मेंस है तो ऑब्वियसली आप मेंस का ही पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आप कंप्लीट ओरिएंटेड हो सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर फेज ऑफ एग्जामिनेशन. बट उसके अलावा आपको इंटीग्रेटेड रखना है. तो अगर हम 1 साल का प्रिपरेशन प्लान करें, तो अभी हम बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे. आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वॉट एवर सब्जेक्ट विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग. देखिए, पढ़ना हमको सबको, ऑल द सब्जेक्ट्स वी हैव टू रीड, वी कांट लीव एनीथिंग.
तो I personally found history very boring. So what I did was I used to combine it with say economics or other subjects. So I somehow adjusted both the things. Then the next thing which I was telling you apart from planning is कि with studying you should also be able to track कि how you are performing, कैसे हम पढ़ रहे हैं. देखिए क्या है कि we keep reading so much and we don't know कि what exactly how are we performing. So what will help you out with this is testing yourself. That's why self study plan is self study making your own plan, making your strategy is very important. We'll talk about it later as well. So abhi I wanted to tell you कि while you are preparing you should either weekly or fortnightly attempting certain questions. Questions are like your feedback. They will tell you कि कैसे how are you performing, how you are preparing, how you perform in those tests or how you perform in those questions. वो आपको एक feedback channel बनेगा आपके लिए. तो जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए you are studying polity and you have attempted you have say studied the topic of the parliament को आपने पढ़ लिया. उसके बाद just find out online या कुछ आपको previous year question papers मिल जाएं, है ना, कुछ आपने बुक ले ली जिसमें previous year के questions हैं, तो उसमें से आप वो वाले टॉपिक के कुछ questions देख लीजिए कि एग्जैक्टली यूपीएससी हमसे चाहता क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन. एंड ये बात आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन, बट आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस दो चीज़ों के प्रिंट आउट्स अपने पास ज़रूर रखें. प्रिंट आउट्स इज समथिंग विच आई रिकमेंड बिकॉज पेन एंड पेपर से ही आंसर्स लिखा, उससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, हाँ या ना. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अगर आप 10 में से 5 सवाल या 6, 7, 8 क्वेश्चंस आप सही ठीक ठाक आपको पता है, मतलब आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस या फिर यू फील वेरी कंफ्यूज्ड कि ये क्या पूछ लिया है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, दिस मीन्स दैट योर द स्टडी मटेरियल दैट यू आर रेफरिंग टू या फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो सही ट्रैक पे नहीं है. So the best way to find out whether you're on the right track or not is to solve questions. And isme don't limit yourself to previous year question papers. You have a lot of online available questions. You have a lot of offline test series. You have a lot of online test series nowadays. तो जो भी आपको मिल जाता है आप बस उसमें अपने को टेस्ट करके देखना है कि क्या हम सही ट्रैक पे प्रिपेयर कर रहे हैं नहीं. कई बार हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, we'll complete everything of that topic and then we will write a test. Similarly, we do with answer writing. We think that we should first complete the entire topic and only then I'll be able to write. See, there will never come a time in UPSC preparation, even when you are giving that mains examination, even when you are going for the interview, or even when you come out selected, that you will know each and everything about every topic. No, that day will never come. So how you will do it is you have to capitalize on what you already know. जो आपने पढ़ लिया है, जो आप पढ़ चुके हैं, या फिर जो आपने समय को उतना टाइम दिया था खुद को कि उतना मुझे पढ़ना है, आप पढ़ चुके हैं, उसी को कैपिटलाइज करना है, राइट. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि प्रिपरेशन के टाइम पे भी, जैसे आपने सपोज एक महीना रखा आपने कि 15 डेज में पॉलिटी का इतने चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी और हिस्ट्री का मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा. तो आफ्टर दैट अ मंथ और अ फोर्टनाइट जस्ट ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन दोस टॉपिक्स. दैट विल बी अ गुड टेस्ट फॉर यू, दैट विल बी योर फीडबैक टू नो कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ. ठीक है. विद प्रेपरेशन एक जो चीज़ जो टॉपिक मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है इज़ करंट अफेयर्स. एंड लॉट ऑफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन ऑल्सो कि करंट अफेयर्स को लेके विच मैगजीन टू रेफर एंड विच आर्टिकल टू रेफर एक्सेट्रा. तो बेसिकली करंट अफेयर्स एक बहुत वास्ट चीज़ हो गई है. आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं. अब सबसे पहले जो आपका बेस सोर्स होना चाहिए वो है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज़ द सोर्स.
आपका कोई भी ऑनलाइन मटेरियल अगर मिल रहा है आपको, तो वो भी न्यूज़पेपर के साथ ही उसका जो है मिल रहा है, न्यूज़पेपर से ही उसका सोर्स है, या फिर कई बार ऑनलाइन वेबसाइट्स में भी ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं, बट मेजरली यही हमारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा सोर्स है। तो you just choose one newspaper, don't go for two. Either Indian Express or the Hindu is what I always say, because मैंने हिंदू पढ़ा था, फिर इंटरव्यू के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, तो I found that Indian Express was equally good. So you can choose either of the two. The Hindu का language is a bit difficult for the starters, तो आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आई रेकमेंड कि आप इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अब फिर है कि व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड, एवरीथिंग, क्या पढ़ना है। सो ऑल ऑफ दिस इज इन योर सिलेबस, सब कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप एक बार सिलेबस पढ़िए और फिर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपके सिलेबस में द पार्लियामेंट लिखा है तो उसके किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, यही आपका सोर्स है। आप व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स कीप आस्किंग कि हमें नहीं पता है किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सी यू हैव टू मेक योर ओन पाथ, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड व्हाट विल हेल्प यू डू दैट इज दीज टू थिंग्स। सो आई वाज टेलिंग यू कि न्यूज़पेपर फर्स्ट थिंग है, इट्स योर बेस। व्हाट टू रीड इज यू विल फाइंड आउट ओवर द टाइम। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर है, ट्राई टू ट्रैक कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अभी तो एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स रोज आ रहे हैं एनालिसिस के, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी मेंस में या फिर प्रीलिम्स में बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि कैसे, क्या, हाउ, व्हेन। सो इसमें ना पॉइंटर्स आप देख सकते हो, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, all of these things पे थोड़ा सा you can just find out, you can just read about it, and that is your one source. Second source for current affairs is a lot of magazines come. Government magazine एक आती है योजना मैगजीन में बहुत अच्छे से कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग ऑथर्स के उसमें आर्टिकल्स होते हैं या ऐसे जैसा होता है, दैट ऑल्सो यू कैन रीड। देन ऑनलाइन कुछ एक, जैसे आई यूज टू लिसन टू न्यूज़ ऑन AIR, एक स्पॉटलाइट एनालिसिस करके आता था, तो वो न्यूज़ रेडियो प्रोग्राम आई यूज टू लिसन, बहुत ब्रीफ में दे यूज टू टेल अबाउट द न्यूज़। कुछ अच्छे डिस्कशन प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के बारे में और करंट इश्यूज़ के बारे में प्रोफेशनल्स को बुला के डिस्कशन होता है, तो दे टेल अबाउट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमको। एंड इसके अलावा अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नाउअडेज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कम आउट विथ करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, मंथली कंपाइलेशन या फोर्टनाइटली या ईयरली कंपाइलेशंस। तो बेटर ये है कि आप एक खुद का सोर्स पहले अपना रखिए और उसके साथ आप फिर किसी एक पर्टिकुलर इसको ले सकते हैं कि जो है कोई भी एक आपने इंस्टीट्यूट का ले लिया या जो आपको अच्छा लग रहा है, विच यू आर कंफर्टेबल विद, उसको आपने रेगुलरली पढ़ लिया। बट अगर एक चूज किया है तो उसको फिर बहुत अच्छे से पूरा फॉलो करना है हमको, ठीक है। दैट्स योर करंट अफेयर्स। देन रिविजन की बात आती है। रिविजन इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस नेग्लेक्ट। हम केवल पढ़ते चले जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हम भूल गए। A lot of students ask me, and I also used to feel कि I have read this topic but I have forgotten it. तो हो सकता है कि मैंने पढ़ा हो आज एंड 10 दिन बाद अगर मैं उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँ तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बना, तो I assume कि I have forgotten. So why this happens is because we don't revise. See, understand very clearly that you will forget. आप भूल जाएंगे, दिस इज अ रियलिटी। यू आर नॉट अ कंप्यूटर कि हमने एक बार एंटर कर दिया एंड देन दैट फाइल विल रिमेन इन योर सिस्टम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ऐसा नहीं होता है। आप भूल जाते हैं, आप बिल्कुल भूलेंगे। वी आर ऑल ह्यूमंस, सो हाउ डू यू आप कैसे इसको टैकल करेंगे? आप रिवाइज करेंगे। रिविजन इज वेयर यू कैन हेल्प योर सेल्फ विद दिस, वॉट एवर यू आर रीडिंग। weekly is a good time. In 7 days and 10 days is a good time to give yourself a revision of what you have read in the previous time. At that time, in your mind, whatever you have read is fresh.
For example, if you are reading, say, anything, any topic about Indian society or any topic in economics, you're reading about GDP. Once you've read the concept, give yourself a week. Again, go back to where you have read. Again, go back to the notes that you have made. Anything, because without revision what will happen is whatever you have read आप पढ़ते चले जाएंगे और आप भूलते चले जाएंगे. There will come a time when you'll feel that you know nothing. It's everything is there in your head, you just need to brush it up again and again, and for that उसका frequency set करिए. जैसे आप weekly you can do it, fortnightly is again the 15 days में again is a good time कि हम वो करें. Monthly भी कर सकते हैं, but all these revision cycles ये बहुत ही personal है. ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि कब मैं वापस जाके अपना वो चीज़ जो मैंने पढ़ा था उसको मैं फिर से पढ़ूंगा. रिविजन में कोशिश ये करनी है कि जितना टाइम हमने उसको पढ़ने में लिया था, say I invested 2 hours to study that topic, I should be taking less than that. I should be taking at least say 50 or 70% of that time to revise, even lesser. So revision का मतलब यही है कि हम छोटे टाइम में जो हमने पढ़ा था उसको हम फिर से ब्रश अप कर लें and we remember the topic. So you have to keep track of it. Making notes will help you out in this. जब आप पढ़ रहे हैं तभी आपने अगर notes बना लिए उस सब्जेक्ट के और फिर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपने उन notes को ही पढ़ लिया डायरेक्टली. Need not directly refer to the book. That can be done. Or if the book is itself written in a manner कि notes ही है, जैसे I was talking about Lakshmikant for polity. That book is written in a manner that अगर आप notes बनाएंगे तो you will end up copying the entire book. It's already in a note format. So you can directly refer to it again after 15 days or a month. But when you plan, when you are making your plan, for studying, in that please keep time for revision also. Even if you take out 1 day or half a day for revision, it is sufficient. But it is extremely important. So when you revise, let's say I told you should take lesser time and you should keep those in your plan. You should have those revision days. So we talked about the GS subjects. Now I will tell you more about the extra topics that you have to study जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे. तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं. फर्स्ट इज एसे. एसे एक एंटायर पेपर होता है जो एक अलग आपको देना पड़ता है. देन यू हैव, इफ यू टॉक अबाउट टॉपिक्स, यू हैव ऑप्शनल. इट्स अ 500 मार्कर important thing that adds in your final result. Optional है. Then there is ethics. Ethics का again there's a separate paper, GS4 it means, that is asked. Then there is world history. Then there is topics like Indian society and agriculture, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस. तो ये कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में इनका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है. इफ दे आर ओनली फॉर मेंस. तो माय रिकमेंडेशन विल बी यू फर्स्ट complete your GS part, which is the core GS, that is history, geography, economics, polity, environmental science. पहले कुछ मंथ्स में आप उन टॉपिक्स को पहले फाइनलाइज कर लीजिए. दैट विल बी योर बेस. उस बेस के ऊपर फिर आप अपना एथिक्स का प्रिपरेशन या एसे का प्रिपरेशन, ऑल दैट प्रैक्टिस यू कैन डू. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज एक्स्ट्रा टॉपिक्स. फर्स्ट इज अबाउट एसे. Essay is is a culmination of everything that you read for UPSC. The topics that will be asked in the essay will range from women's empowerment issues to agriculture to technology to change, and nowadays there are a lot of philosophical topics that are being asked in the UPSC paper. So the topics are going to be diverse. तो उस चीज़ के बारे में to write in 1,000-1,200 words, you need to be aware about the topic very well. Yeah, at least you should have a general idea of what that topic is about. Yeah, उस particular sector में क्या चल रहा है, what is happening. So I recommend not to start, not to hurry into writing your essay from day one. Take your time. थोड़ा अपना एक base बनाइए, अपना एक foundation बनाइए. And once you are through the basic NCRTs and you have a basic idea of what the subjects are about, then every week you can start writing an essay. जैसे on a Sunday or whatever day that is an off for you or you are keeping it separate, उस दिन आप उस essay writing कर सकते हैं. And choose any topic which has come in the previous year, or you can find topics online. But try to do this essay writing. The more essays you write, the more you will be aware about how the structure has to be,
how everything has to be written in those 1,000 words, how the flow should be there. Try to see some toppers copies online. उसको देखिए कि कैसे वो लोग लिखते हैं आंसर्स या कैसे essays लिख रहे हैं. तो that will also help you out. The second thing which is very important in mains is the optional subject. So you guys all have queries ki how to choose your optional. What should my optional be? I'm doing this and what should I take? So see, optional subject is something which अगर आप humanities background का ले रहे हैं तो आपको masters level तक का उसमें पढ़ना पड़ेगा for UPSC standard examination. So take something which I always tell is something which interests you, something which you really like studying. That is one. And second, you can choose something which you are graduating in. Say if you are a doctor, you can choose medical science. If you are a graduate of political science, you can choose that. That helps you out because the same thing is being asked in your graduation, in your college papers also, and the same thing thoda with variation, with thoda depth, change of topics is asked in your UPSC. So the first thing will be to try to choose something which you have as graduation. But ऐसा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो that is fine. जैसे I had chemical engineering, but it was not as an optional for the civil service. Chemistry was there, but chemical engineering was not there. So I chose sociology. अब वन सेज कि आपको कई बार 2-3 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन भी होगा कि आई हैव ये 2-3 टॉपिक्स हैं और मुझे नहीं समझ आ रहे हैं कि व्हाट टू चूज. So in that sense, I would recommend कि you go through some of the previous year papers of that particular subject कि optional में exactly पूछा क्या जाता है, and also you can do is you can read the subject का एकदम basic books for 1 or 2 weeks. That will help you understand कि what is the line of preparation in that particular subject कि what exactly are you expected to read and study. तो in that sense, अगर आप ये 2 चीजें करते हैं तो you can zero down on some subject. Again, I want to say कि optional subject का preparation day 1 से शुरू करने का या day 1 से सोचने का कि मुझे क्या optional लेना चाहिए जरूरी नहीं है. पहले आप थोड़ा base बनाइए, अपना GS बनाइए. हो सकता है कि आपको जब आप GS पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि history is something which I find really interesting. So you can take that as a subject. Another factor for choosing an optional is कि what is the amount of guidance available. क्या आपको उसमें कुछ नोट्स मिल सकते हैं, क्या आपको कोई टेस्ट सीरीज मिल सकती है, क्या कोई टीचर है जो उसको पढ़ाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन या व्हाटएवर. सो दिस कैन बी अनदर फैक्टर. इससे थोड़ा हेल्प हो जाता है. When you choose something which nobody is choosing at all, इसमें फिर गाइडेंस का भी इशू आएगा एंड आपको समझ नहीं आएगा कि क्या डायरेक्शन चूज करना है. So this can be another factor for choosing your optional. But again, I'll tell कि थोड़ा 1-2 महीने आप पहले GS पढ़िए, find out how the subjects are, and then you can try to study your optionals. The next subject which is exclusively there for mains is ethics. Ethics is a very interesting subject and it's very different. ये जो है पूरे आप जो भी subjects पढ़ेंगे GS में उससे एकदम अलग रहेगा because it's completely practical. There are case studies asked कि you are given certain cases कि आप उस समय if you're an officer, if you're a doctor, if you're a police officer or something, how will you react in that situation? What is the decision that you'll take? So and you are asked about your ethical values कि why honesty is important, why emotional intelligence is important in service. ये सारी चीजें हमारे practical service के लिए बहुत ज़्यादा important होती हैं. तो दिस इज नॉट समथिंग कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज समथिंग विच इज इट्स वेरी प्रैक्टिकल. यूल रीड न्यूज़ पेपर्स, यूल रीड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो यूल गेट टू नो मोर. तो आई वुड रेकमेंड कि एथिक्स को आप थोड़ा एंड पे ही रखिए अपने प्रिपरेशन फेज के. बहुत ज़्यादा इनिशियली शुरू के स्टेज से एथिक्स को पढ़ के इतना ज़्यादा नहीं अच्छा कर पाएंगे. तो माई रिकमेंडेशन विल बी कि पहले आप अपना GS थोड़ा वो सब हो जाए. जब आप ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और you can you are starting to discuss about the issues with your friends or your family, that will be a time where you can pick up on ethics. And you can ethics के लिए there are books available and there are books for case studies, but the good source will be कि you should directly pick up the previous year question papers. कि what is the line of thought that is being asked. There are key terms in the syllabus which you need to prepare.
तो उनकी टर्म्स को उठा के फिर उसकी डेफिनेशंस दे के उनके आंसर्स लिखना ट्राई करना, दिस इज हाउ एथिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड। इसके बाद देर आर 2-3 टॉपिक्स विच आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट। फर्स्ट इज टेस्ट सीरीज. Test series, before test series we'll talk about coaching. See, this is a common question for everybody, that whether to join a coaching or not. See, actually क्या है UPSC, as I was telling you, UPSC as such is not a complex. The concepts that you'll read are not complex. The only challenge of this exam is its vastness. The fact that you have to read a lot about a lot of subjects. So it's always better to have somebody to guide you. Now that person can be a person who's already selected in service, or it can be a person who is preparing, or somebody who's preparing cannot be your guide. It can be a person who you can discuss with, but somebody who's already selected, somebody who's given that exam, is experienced in that. And then coachings help you out because there are teachers, there's faculty, there are people who will tell you what books to read, what notes to refer to and everything. तो एक थोड़ा सा guidance हो जाता है हमको. तो it is not absolutely essential to join a coaching. A lot of people crack it without joining a complete course. But it's always better कि अगर आप कोई गाइड ले लेते हैं, कोई एक घर में प्लानिंग मिल जाता है, थोड़ा हेल्प मिल जाता है, तो दैट इज गुड. So I recommend कि choose according to what your preparation phase is. अगर आप manage कर पा रहे हैं, you're getting some options online nowadays. There are a lot of online options available. जैसे if you go through the self-study plan, which the UPSC guide gives you, is also good, because what happens is they give you certain topics to read every day, and then they give you tests on that. तो जैसा मैं बता रही थी कि विद प्रेपरेशन वी इग्नोर गिविंग टेस्ट. वी फील जब तक पूरा प्रिपेयर नहीं कर लेंगे तब तक टेस्ट नहीं देंगे, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ये नहीं करना चाहिए. इट्स बेटर जब आप पढ़ रहे हैं साथ में ही अगर आप वीकली या मंथली टेस्ट लगा पाए, तो आपको ये पता चलता रहेगा, एक आपको फीडबैक मिलेगा कि जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सही लाइन पे पढ़ रही हूँ. So you can choose such kind of self-study plans, and you can make your own strategy based on these. So coming to test series, very very important. ऐसा नहीं है कि you should इससे क्या होता है, basically UPSC exam is an all India level exam, we all know. A lot of students prepare, so to find out where you stand, whether or not you are on the right track, and to do some mid-course corrections, a test series is really helpful. Whether it is for prelims or for mains, don't wait for the last day कि I will complete the syllabus and then join. Don't do that. After you have a basic base of your preparation, you can join anything. You can test series का मतलब ये नहीं है कि कोई series ही join करना है. I'm telling attempting tests, trying to give exam, trying to solve test papers. This is very important to be done along with your preparation. And you can start with certain part tests. मतलब आप कोई एक particular subject से शुरू कर सकते हैं, जैसे आज आपने polity को ही रेफर किया इसको, उसके बाद over time you can go for overall tests, जैसे mock tests for prelims, this I'm talking. And for mains, आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग you can start every day. So जैसे आपने basic books पढ़ लिए, तो take up some question which you find online, try to write an answer. सी कि कैसे आप क्या आप 150 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में जो पूछा गया है उसके बारे में साइजेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छे से लिख पा रहे हैं या नहीं. तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग, एंड आंसर राइटिंग इज अगेन अ स्किल विच यू विल डेवलप ओवर टाइम. सो टेक सम टाइम आउट टू राइट एटलीस्ट 1 or 2 आंसर्स एवरी डे. सी कि आप आंसर को स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं, हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग, स्टार्टिंग इट, देन क्या जो पूछा है आर्ग्यूमेंट्स उस क्वेश्चन में उसको सही तरीके से बता पा रहे हैं, एंड देन ट्राई टू गिव सर्टन पॉजिटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द एंड. कुछ गवर्नमेंट स्कीम या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें डाल के उसमें आंसर को कंक्लूड करके आप उसको क्लोज करें. तो ये सब चीज़ें आंसर राइटिंग अलॉन्ग विद टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग जो एक क्वेश्चन कॉमन रहता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है. जैसे if I'm going to college and if I am going to my I have a job, so how do I manage my time along with it. So
time is something which everybody has same. We all have 24 hours. The person who cracked the exam, the person who could not make it, everywhere, anytime, we all have 24 hours. So the basic skill is कि आप उस particular 24 घंटे को कैसे utilize करते हैं, कैसे capitalize करते हैं. एक चीज तो बिल्कुल पक्की है that you have to cut down on the extra things that you waste time on. Whether it is social media, whether it is going on events, whether it is going out, I personally feel that the major focus, अगर आपने एक बार decide कर लिया है और आपने अगर 1 से 1.5 साल अपने life का आप इसको दे रहे हो, तो उसको आपको 100% आपको you should give your time. So you have to take out at least 5 to 6 hours, 6 to 7 hours of your day. That can be any time, whatever it is available. जैसे for example, while commuting is a good time. You're going somewhere, coming back, that's a good time. You can browse through the newspaper, browse through the current affairs. Then if you get some good standard time, library आप पढ़ते हैं या घर पे पढ़ते हैं, wherever it is, you can channelize your time, divide it into subjects. Say 2 hours for one subject, 2 hours for some another subject. And when you end the day, try to try to go through the newspaper, or try to go through the current affairs. There are a lot of websites nowadays, platforms, जो आपको पूरे दिन का एक summary बना के देते हैं. So when you close your study day, you can just go through that summary. You can go through what all has happened, and then there are certain tests, certain questions which they give, that also you can solve. So in that way, you should plan your entire day. And how to manage it with college or job is you have to squeeze time out, and you have to decide ki, what is the major focus of my life. So say even if after college, for example, even for my college I had to attend mostly, and attendance was a big issue. So while commuting, I used to read the newspaper. Aate time again I used to complete it. अगर कहीं after coming back, I used to, in the evenings I used to start, until late night I used to study. So like that you can plan your day. Try to cut down on all the other things where you waste your time on. Just find out कि कहाँ पे हमारा time जा रहा है. कई बार पता ही नहीं चलता है. Just start your day, सुबह होती है, go to college, go to coaching, come back, and the day ends. So don't let that happen. Plan your every hour. Make sure that you are not wasting it being distracted somewhere. And having said that, I'll also say that your mental health is very important. Stress is something which will come and which you will feel while studying, while UPSC preparation. We will talk more about it. My next topic आपको motivation और उसके बारे में ही बताने वाली हूँ. But while we are talking about time management, मैं ये कहूँगी कि अपने प्रत्येक घंटे को plan your every hour, what you are going to study, where you are going to spend it, and try to cut down on all the non-essential time consuming activities. Keep some time for refreshment also. Keep some time for study breaks. We are not robots, so you should ideally take out 15-20 minutes after every 2 hours, so that you get refreshed, ताकि आपका you keep yourself engaged in preparation. That is also important, and okay, next thing that I'll talk about is I'll just go through your questions that I have received. If there's any point which I have missed, you're asking about managing time along with college. Yeah, I covered that. I'm in third year BTech. Is it compulsory to do internship? Yeah, see, this is a very, very personal question. I will not advise you on whether to do internship or not. See, one thing which people ask, and what happens is sometimes we start planning our entire careers based on this examination. This should not be done. My recommendation to you all will be that UPSC is an exam. Take it like that, okay? Graduation and to do that or not, everything is decided by your interest, and you should have a good backup. You should always have a good graduation backup with you. That is your basic skill, right? If you are known as, आप जब पूछते हो क्या किया है, you will be known कि I am a graduate in this, or I am a doctor, or I am an engineer. So that is very basic to your entire career. So focus on that as well.
अगर आप साथ में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना प्लानिंग कैसे कर सकते हैं. जैसे it's your college exam coming up, this semester exam. Before the semester, for example, what I used to do 1 month before the semester exam, I used to channelize my time. जैसे we used to have 5 subjects and 5 chapters in each subject. So I used to plan 25 days का plan, 1 day 1 subject, and you are able to cover 1 day 1 subject is not difficult at all. So ऐसे करके अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो कोई भी कॉलेज का एग्जाम हो, you will be able to perform well in that. You should not neglect your college studies if you are preparing for UPSC preparation. Do not neglect them. It is very important, and try to study in a manner that आप उसको equal amount of attention दे पाए, especially in the time of examination. That is a skill which you will carry all lifelong. So you should focus on that as well. Then something about before we talk about other things about coaching strategy and everything, motivation वाला एक point हमेशा रहता है कि we don't get motivated, yeah, how to keep ourselves motivated, so see, the question is why are you choosing to give this exam? What is it which you feel that you will be able to do when you become something after qualifying this examination? क्या है ऐसा? So that why should be very strong, and that why is the reason for everything. Whenever you get demotivated, you should return to that why. उसको कहीं लिख करके रख लीजिए, कहीं उसको एक रिकॉर्ड करके रख लीजिए, उसको कहीं डिस्कस करिए, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताइए. So that why is very important. Why did you start? Why did I start? Write it down, keep it somewhere, so that bar you should be able to tell yourself that this is the reason that I started. I want to do something for the people. I want to be able to contribute something for the society. या मैं किसी एक व्यक्ति की लाइफ चेंज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं फॉरेन सर्विस में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, या वट एवर दैट इज. सो these are the things that you should keep yourself, this will keep you motivated. No other बाकी की और चीज़ें मोटिवेटेड ज़्यादा समय तक नहीं रख पाती हैं. आपका वाई ही है जो आपको पूरे प्रिपरेशन जर्नी में आपका साथ देगा. एंड स्ट्रैटेजी की बात आती है तो you should always make your own strategy. जैसे you are listening to me today, you will be going through a lot of other articles, other speakers, other toppers, etc. But the strategy that will help you sail through in UPSC examination is your own strategy, is your own thing, because we all come from different backgrounds, and we all have different strengths, different weaknesses. So you should be making your own strategy कि जैसे मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो मैं इसको कम समय में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ. ये सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट, तो आई स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट सो दैट आई डोंट गेट बोर्ड एट द एंड ऑफ द डे, and along with that, how am I taking out for revision, time कैसे निकाल रहे हैं, कैसे अलग अलग कर रहे हैं. All of this you should be planning accordingly, according to your own strength, according to your own preparation speed, and that will really help you out. Another thing is, which is something which I'd like to tell you all, is जैसे हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज और कोचिंग की बात कर रहे थे. अगेन यूपीएससी गाइड हैज दिस फाउंडेशन कोर्स which they have started. Why I like it is because it's very affordable. Otherwise, if you go around, the tests are not available in such prices. So there's good faculty. There's, I think, retired officer as well who they have on board. So अगर एक कुछ तरीके का गाइडेंस हमें ऑनलाइन मिल जाता है तो हमें थोड़ा हेल्प करता है सारे पूरे प्रिपरेशन जर्नी में हमारे. So you can check out the foundation course that UPSC guide has. And another thing which I'll tell you is keep a track of your preparation and keep attempting the tests, keep attempting questions. Prepare according to the plan that you have created for yourself. Take guidance from others, but ultimately आपका सिलेक्शन आपके ही सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करेगा.
नो मैटर कहीं पे भी आप क्लास कर रहे हैं, योर एंटायर प्रेपरेशन, योर एंटायर सिलेक्शन, योर एंटायर परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी आवर्स you are giving with yourself for self study. That is the only thing which will help you out finally. तो उस पर अच्छे से फोकस करना है. एंड apart from your studies, please take breaks every 15 days, every 10 days. That is important because we sometimes get bored, we sometimes get demotivated, we sometimes get stressed. तो stress buster होना चाहिए every 15 days or a month. Please go watch a movie, go around, do something which you like, have some hobby that will keep with your preparation. You can do some yoga, you can meditate, you can sing, dance, do whatever. But please take a break as well. It is extremely important. And finally, I think I have covered most of the topics and the questions that I got. And I hope that I have been helpful to you. And so which chapter to cover, what to cover. See, these are things which I again am telling you. ये आप वापस जाइए, सिलेबस पढ़िए, वापस जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए. ट्राई टू फाइंड आउट ऑन योर ओन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोज आर द टू सोर्सेज जिससे हम सभी पढ़ते हैं, उसी से पता चलता है. सो गो बैक टू दैट. And I think that I have been able to cover the topics that you had asked, the questions that you had asked. And thank you so much, everybody, for your time. I hope that it was helpful to you. And we'll try to conduct this session again. And we'll try to interact with you again later. Thank you so much, everybody. I don't know how to close this. Session, so I have closed, I have paused. एक मिनट. हाँ, I think close हो गया. End class कर दे.